Hello everybody. Today is a wonderful day, Janmashtami ka din hai, and we are going to launch our Thinking Thursday newsletter, which is called Neti Neti, before our guest speaker starts her talk. So please watch this wonderful launch of Neti Neti, Thinking Thursday newsletter. This is going to be a biannual newsletter where everybody from our Thinking Thursday group can contribute their ideas in the form of inspiring articles, poems, and their stories. I wish to express my gratitude to all who have made this dream a reality. I'm now going to show you the newsletter. This is how our front page looks of the newsletter. And the whole theme this time is about self-love. This is our page of contents. We have 26 pages, and each page is going to give you some inspiring article. Our first page as to why have we called it Neti Neti, and a little bit about me, Dr. Tripti Jain. You can read up a little bit on it. Swami Aparajitananda has written a wonderful article on what is Neti Neti, and he's also spoken about his thoughts on self-love. We thank him deeply from our hearts. These are all quotes by our own Thinking Thursday participants and people and members and all our loved ones. Gauri has written a wonderful article on self-love, and I think you're going to love reading it. Gauri, you are right here, I know. I just saw you enter, so thank you so much for your contribution. Yes, ma'am. Thank you. We have this young boy, Yuvin. He's also here, 13-year-old, who is part of our Thinking Thursday group. And Yuvin is also right here. Yuvin, hello, bacha. Thank you so much. We have a wonderful poem here by Dr. Pallavi. So thank you, Pallavi. Our own Ratna Mishra is right here, a wonderful Hindi author herself and a poetess. She too has contributed. Thank you, Ratna. Nidhi Sagar. Nidhi Sagar, wonderful healer who's made a very interesting crossword. So if you go through the newsletter and you can solve this crossword, I think it will be wonderful. So thank you, Nidhi, for really quickly. I just sent you a message and the very next day or 2 days later, you had the crossword already. So thank you so much. And we have Shipra, Dr. Shipra Singh, who's also written a wonderful article on self-love. So thank you, Shipra. And of course, Ranika, who goes by the name Vinodni. She's also right here with her poem. Ranika, thank you, my dear, for the contribution. And I have written an article on self-love too, how we develop self-love from the time that we are a little child. So I write the and we have this wonderful story of Olivia and her journey, her difficult journey from being a different gender, a male gender, to becoming a woman, and how she struggled and how she developed the courage, and all because she loved herself so much. So this is like a celebration of self-love. I'm sure all of you would love reading the article. We have this amazing article by our own Swati. Self-love is diving into scriptures. So thank you, Swati, for writing this amazing article for all of us to read and increasing our knowledge. Thank you. Of course, we also have our Thinking Thursday group is of more than 500 people.
And there are so many contributors who win awards and recognition. So this year in 2023, we have 3 amazing award winners. We have Shrija Jhavar, Ritu Satya Arora, and Sunita Krishna, and they are also being felicitated by all of us here. Thank you. This is our team. Svikar is the name that we've given to the editorial team. We have Shakuntala ji, Shrija Jhavar, we have Nidhi and Sunita. Each one of them is doing work in their fields of whether it's NLP, it's life coaching, astrology, being an artist. At the same time, they've given time to help us edit the articles and poems. So thank you, Nidhi, Sunita, Shakuntala ji, and Shrija. And of course, you can't make a newsletter without the design team. So Ritu and Mehek have been instrumental with their late nights to design the whole newsletter for us. So thank you, Mehek and Ritu. Thank you so much. And of course, please note that all the articles and poems are original work of the team members. The images are not designed by us, and we are only using it for inspirational purposes. We respect the work of the artist and thank them for creating such beautiful artworks. So hope to see you in the next edition. The answers of the crossword are right here on the last page. So just in case you don't know an answer, well, struggle a little bit, but then you will get the answer on the last page. So thank you so much, everybody, for making this something that I just thought of, and everybody got together and contributed it. So thank you, everyone. I love you all. Thank you so much. Wonderful. So thank you. Thank you so much, everyone. I need to stop share. Okay, so thank you, everyone. And we can get back to our regular guest speaker introduction. So I want all of you, obviously the newsletter is going to be shared on our Thinking Thursday groups, and please share it forward to everyone else. Put it on your Insta, on your Facebook page, and let's try and get some interesting articles for next year now. Okay? So now let me introduce our speaker for today, Santosh Mishra ji. Santosh is right here with us. Hi, Santosh. Namaste. So Santosh ji is a senior trainer, a lecturer, mentor, counselor, certified pranic healer, and a holistic life manager. She holds a master's degree in economics and a master's degree in law from the University of Mumbai. She has her law firm and has practiced law for more than a decade before she took up pranic healing full-time. She has more than a decade experience and heads a successful holistic life management center, a divine fusion center for pranic healing and Arhatic yoga at the Hiranandani Garden in Powai, which is in Mumbai. He's a senior trainer and teaches across Mumbai, Navi Mumbai, Raigad, Nasik, Pune, Maharashtra, and all over India. She has been instrumental in inspiring people to adopt a holistic lifestyle through her talks at the corporates, colleges, schools, banks, and NGOs. She's passionate about spreading awareness about wholesome lifestyle by empowering people to take charge of their life to manifest a life they desire. I thank you so much, Santoshi, for being here with us. And we are definitely excited about listening to pranic healing and your contribution to this amazing healing modality. And I know there are many people here who are already practicing pranic healing, but you know,
a different view, a different perspective from a teacher who has been teaching for such a long time really matters a lot, because everybody keeps asking, how does it work? And, how long does it last? Like the healing that is done. I think that's another question that people keep asking, whether you are a pranic healer, a Reiki practitioner, a past life regression therapy. Ma'am, abhi to mujhe acha lag raha hai, but kya hamesha acha lagega? Am I cured? So I think that's a very important question, and I'm sure you are going to be able to answer that. So thank you, Santoshji, once more, and for coming here and gracing us. Thank you. I'd like everyone to mute themselves. We will, of course, be speaking, but Santoshji is now going to be speaking. So let's just listen to her. Santoshji, please go ahead. If you have to share a PPT, you can now share. Thank you, Truptiji. Thank you for having me on your platform and to address all these beautiful souls over here. So happy to see everyone blooming, smiling. All of them are very lovely lot, filled with lots of love. I can just feel it radiating all across the meeting room and, reaching across, to wherever we are, all across Mumbai, Maharashtra, and wherever we are. Thank you so much for this opportunity. Thank you to all of you all to be present. I speak in Hindi and English or only in English? What would you want me to continue? A mixture is absolutely Both? fine. Yeah. Bilkul. Or one? ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग प्राणिक हीलर हैं टाइप 1 इन द चैट बॉक्स. तो इसको इंटरैक्टिव रखते हैं तो मजा भी आएगा, वरना खाली एक जन बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं, चलेगा? ऑलराइट, बिल्कुल. ओके, दैट्स वन. So, Atma Namaste, Sapna, Rose, iPhone, Aarti Sharma. All right. So, at least 3 people have said number 1. तो यानी 3 प्राणिक हीलर्स हैं. आप लोग भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप लोग प्राणिक हीलिंग आपने किया है. मैं और त्रुटि जी कुछ महीने पहले जब हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात की थी, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो अभी भी हीलर्स होते हैं, चाहे वो कोई भी मोडालिटी के होंगे, जैसे उन्होंने राइटली कहा कि हर एक का यही प्रश्न होता है, हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक टू हील and am I fully cured? Will this ever come back or no? So हम ये सारी चीजें एड्रेस करेंगे. अगर आपको लगता है ये एड्रेस नहीं हो पा रहा है, एक और पहलू रह गया, आपको कुछ और पूछना है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. सो इस सेशन को शुरू करते हैं बिल्कुल एक नए अंदाज में, जैसे कि पूरा क्लीन स्लेट है और हम पहली बार ही कोई हीलिंग मोडालिटी के बारे में समझ रहे हैं, जैसे कि प्राणिक हीलिंग है. ठीक है, आई विल शेयर अ छोटा पीपीटी एंड वी विल स्टार्ट. सो ये हैं हमारे टीचर, आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं. इनका नाम है ग्रैंड मास्टर चोकपश्री. ये फाउंडर है मॉडल प्राणिक हीलिंग और अरहातिक योगा के. जो भी आप टीचिंग्स टेक्निक्स के बारे में सुनेंगे, मैंने सब कुछ स्कूल से ही सीखा है. सो ऑल क्रेडिट टू द टीचर. आगे बढ़ते हैं. इस सेशन में आपसे क्या अपेक्षित है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू फ्रॉम दिस सेशन इज इंटेलिजेंट इवैल्यूएशन. It means whatever is being stated out here or whatever is being shown to you through this presentation and spoken out here, do not accept or reject anything. What we do is we go through the session, and then after having experienced a few techniques that we'll practice here, and if the meditation, if possible, if time permits, then you can draw your own conclusion, because we are not doing the class here to give a complete evaluation whether this really works or not. ठीक है? तो हम लोग मैं ये चाहती हूँ कि अभी आप अपनी आंखें बंद करेंगे और 2-3 सेकंड में जस्ट मेक अ क्विक एनालिसिस. हाउ डू आई फील मेंटली एंड इमोशनली. मेरी मानसिक और इमोशनल स्टेट्स अभी कैसे हैं. ये क्यों करना है? क्योंकि एंड ऑफ द सेशन में आपको फिर से यही पूछूंगी, व्हाट आर योर इंटरनल स्टेट्स मेंटली एंड इमोशनली thereafter. मूविंग ऑन, व्हाट इज प्राणिक हीलिंग. प्राणिक हीलिंग क्या है, ये कैसे काम करता है और लोगों को क्यों करना चाहिए. तो प्राणिक हीलिंग एक विज्ञान है और एक कला भी है. इट इज अ साइंस. व्हेन यू से समथिंग इज अ साइंस, व्हाट डज इट मीन? लेट मी जस्ट स्टॉप शेयर. एक विज्ञान है, उसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स गिवन अ बॉडी ऑफ नॉलेज.
कुछ नियम और कानून होते हैं, और चाहे आप वो एक्सपेरिमेंट करें या मैं वो एक्सपेरिमेंट करूं, उसका नतीजा सेम रहता है. If A plus B equals C, केमिकल A प्लस केमिकल B इक्वल्स केमिकल C, उसका रिजल्ट है, तो हमको उसमें विश्वास करने की जरूरत है कि वो C बनेगा? नहीं ना. चाहे वो आप करें या मैं करूं, कोई भी करे, उसमें विश्वास करें नहीं करें, तो वो बिल्कुल उसका जो निष्कर्ष है, उसका आउटकम है, वो हमेशा सेम रहेगा, whether it's a beginner or someone who's done it for years. So also with the science, प्राणिक हीलिंग नैसर्गिक नियमों पे बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ नेचर. सो दो नियमों पे बेस्ड है, जैसे आपने देखा, एक है स्वयं चिकित्सा और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी जिसे कहते हैं. इसका मतलब होता है कि हमारा शरीर एक इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है, वो सक्षम है अपने आप को हील करने में. और आप लोग सब हीलर्स हैं, हम आप भी ये जानते हैं. सो जैसे छोटा मोटा कट होता है, पेन होता है, बर्न होता है, कुछ भी होता है, तो हमने कभी वंडर नहीं किया कि वो जख्म भर कैसे गया, वो स्किन बन कैसे गई, है ना, वो जख्म अपने आप ठीक कैसे हो गया. दैट मीन्स देयर इज अ इंटेलिजेंट मैकेनिज्म, एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी इज बेस्ड ऑन दैट. अच्छा, तो अगर ये लॉ ऑफ नेचर है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है और वो बाउंस बैक ही नहीं हो पाता, है ना. तब हम जाते हैं एक हीलर के पास या एक डॉक्टर के पास, जो कुछ दवा देते हैं, और हीलर हीलिंग करता है, और कुछ समय बाद आप ठीक हो जाते हैं. यस और नो? तो दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड लॉ, जिसे कहते हैं ऊर्जा का नियम और लॉ ऑफ लाइफ फोर्स. ये जीवन जीने के लिए प्राणा और एनर्जी की जरूरत होती है. इसीलिए हिंदुस्तान में हम लोग कहते हैं ना, जब कोई गुजर जाता है, हम क्या कहते हैं? उसके प्राण छूट गए. Right? Don't we say that? That means it is prana that gives life to this body, है ना. ये शरीर जो जीवित है, वो प्राणा के कारण ही जीवित है. और जब यही प्राणा या एनर्जी या लाइफ फोर्स हमारे शरीर में ऊपर नीचे हो जाता है, क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज, तब जाके व्याधि या प्रॉब्लम या डिजीजेस या प्रॉब्लम्स आते हैं, जो ठीक ही नहीं होते. और पहला जो नियम है स्वयं चिकित्सा का या सेल्फ रिकवरी का, वो अपने आप को कार्यरत नहीं रह पाता, and then we need a helping hand from the doctor or from the healers. ठीक है. जैसे एक सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ. एक छोटा बच्चा है 10-12 साल का या 16 साल का, और एक 50-60 ईयर का कोई अडल्ट है. दोनों को सेम तरह का फ्रैक्चर होता है. इसमें से कौन जल्दी ठीक होगा? The young boy. Yeah, the young boy. क्यों? Because they're full of prana or energy, packed with energy. Therefore, their body heals much faster. That means हम उतने ही हेल्दी हैं जितना हमारे शरीर में क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ प्राणा टॉप शेप में है. जब भी इसमें उथल पुथल या इम्बैलेंस होता है, तब जाके हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है. It becomes diseased, be it physical, mental, psychological, or name it, any kind of illnesses. It comes because of the imbalance in the energy within our system. Is this clear so far? All right. So अभी जो हमारे शरीर का डेफिनेशन है, सो व्हाट डज अ बॉडी मीन, और व्हाट डज अ बॉडी कॉम्प्रोमाइज? लेट्स कंप्राइज ऑफ, लेट्स मेक इट अ इंटरैक्टिव सेशन. आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. हमारा शरीर किस चीजों से बना है, या शरीर का डेफिनेशन हमारे लिए क्या है? मैटर एंड एनर्जी. ओके. शरीर पंच तत्वों से बना है. पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है. ओके, करेक्ट. और टाइप करना चाहो टाइप भी कर सकते हो, अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं. दोनों खुला है मेरे सामने. बोलिए. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बॉडी? पंच महाभूत से बना है, त्रिगुणात्मक है. ऑलराइट. त्रिगुणों से बस. ठीक है. एनीबॉडी एल्स? त्रिदोष also. त्रिदोष. Okay. Okay. So the pranic healer is talking about the other things. Okay. Etheric, emotional, mental matter. All right. ठीक है. तो thank you for your reply, सदना. हमारा जो शरीर है, हमको बचपन से सिखाया जाता है कि आप शरीर हो, you're the body, है ना? Which is true partially because we can feel it, we can touch it, we have our existence, we live and we experience world and gather experiences through this. We evolve because we are contained in this body. Yes, no? है ना? We come into this body of limitation only to evolve, gain experiences, gain knowledge, and then evolution happens, है ना? तो ये शरीर बिल्कुल है, मगर क्या ये डेफिनेशन पूरा है? जैसे बचपन से हमको सिखाया जाता है, आंख है, कान है, नाक है, शरीर है, हार्ड मास है, खून है, तो ये हमारा शरीर है ना? तो y'all are all healers, so you already know what I'm going to talk about. But when I came into pranic healing, for me it was very new.
जैसे हमारा जो कंसेप्ट है बॉडी का, जो हम समझते हैं केवल हम शरीर हैं, तो हम शरीर का डेफिनेशन ही लिमिटेड है इन जनरल मैसेस के लिए. जैसे वी हैव दिस फिजिकल बॉडी, दैट्स ट्रू. सो वी हैव अ विजिबल फिजिकल बॉडी. विजिबल क्यों? बिकॉज मैं इसको देख सकती हूँ. And then we also have a energy counterpart to it. Okay, the invisible physical body. Okay, let me just share this. एक छोटा सा share करके बताती हूँ. All right. So एक होता है विजिबल फिजिकल बॉडी और दूसरा होता है इनविजिबल फिजिकल बॉडी. जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक फिजिकल बॉडी है, उसके आजू बाजू दो आकृतियां हैं. There are two outlines out there. One following the contours of the body, which is known as the inner aura, and the outer one, which is like an inverted egg, is the outer aura. अब ये definition में हम नहीं जाएंगे. This is a part of the class. तो generally कैसे होता है? The inner or the aura of a person is not distinct and separate or different body. The aura of a person begins from inside out. It interpenetrates the visible physical body. माने ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर हमारा हमारे एनर्जी बॉडी या हमारे ऑरा में है, ना कि वो बाहर है और ये अंदर है. ऐसे नहीं, ये अंदर बाहर. इट इंटरपेनेट्रेट्स. जैसे आप एक बोल में पानी लेंगे, उसमें आप स्पंज डालोगे और बाहर अगर आप स्पंज निकालोगे तो आप पानी कहाँ है? स्पंज के अंदर भी है और स्पंज के बाहर भी है. बिल्कुल उसी तरह हमारा जो एनर्जी बॉडी है, हमारे जो ऊर्जा शरीर है, हमारा जो बायोप्लाज्मिक बॉडी है या ऑरा है, वो हमारे शरीर के अंदर भी है, अंदर से शुरू होते हुए बाहर की ओर एक्सटेंड करता है. ठीक है. सो सामान्य इंसान में ये जो इनर ऑरा जो आप देख रहे हो शरीर के इर्द गिर्द जो आकृति है, ये 4 से 5 इंच की ओर होता है फॉर अ पर्सन विद अ नॉर्मल दिस थिंग. जो एथलीट्स होते हैं, मेडिटेटर्स होते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनका जो इनर ऑरा होता है वो काफी और थोड़ा बड़ा होता है. सो यू विल से ठीक है 4 इंच 5 इंच 1 मीटर क्या फर्क पड़ा उससे? वी आर एज गुड एज द एनर्जी इन आवर ऑरा. All that happens here is eventually going to affect here. That's what. So both are interconnected and interrelated. It's like this. There's an example. Let me just stop share. 2 गाड़ियां हैं, दोनों सेम हैं, हर लेवल पे सेम है. ठीक है, सिर्फ उसमें एक फर्क है. 1 minute. Can we mute the? That's done. Yeah. Okay. Thank you. Done. सो समझो 2 गाड़ियां हैं. अब ये 2 गाड़ियां हैं, दोनों समान हैं हर तरीके से. दे आर सेम एट ऑल लेवल्स एक्सेप्ट दैट द फ्यूल और द पेट्रोल, वन गाड़ी इज फुल टैंक एंड द अदर गाड़ी इज हाफ टैंक. अब मैं इनको बोलती हूँ चलो गाड़ी चालू करो और चलाते रहो जब तक आपका पेट्रोल खत्म नहीं होता, तो कौन सी गाड़ी सबसे दूर जाएगी? ऑब्वियसली द फुल टैंक, है ना. एवरीबडी नोज दैट. ये बिल्कुल वैसी है. एक इंसान जिसका ऑरा बड़ा है, ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, क्लीन है, वो हेल्दी है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मैग्नेट. दे अट्रैक्ट person, people, situation, opportunities, good luck, like they live a very long life and they can manifest what they want. So आप उतने ही सक्षम हो, उतने ही मैनिफेस्टिंग हो जितना कि आपके शरीर में ऊर्जा या एनर्जी या प्राणा है. All right, it is something like that. When we see people who are dynamic, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इतना एफर्टलेसली. अच्छा, घर भी कर रहे हैं, वेकेशन भी कर रहे हैं. हम सोचते हैं भैया कौन से चक्की का आटा खा रहे हैं कि 9 से 5 का जॉब भी कर रहे हैं और ये सारी चीजें भी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं और फिर भी एकदम स्माइलिंग है और उनको देखो तो थकान नहीं, शिकन नहीं, कुछ नहीं. ऐसा होता है ना? ऐसे है ना लोग सोसाइटी में. सो व्हाट इज डिफरेंट इज द एनर्जी इन देयर सिस्टम एंड देयर ऑरा, है ना. सो दैट इज व्हाट इट इज. नाउ लेट मी ऑल्सो गिव यू एन एग्जाम्पल. अभी गणेश जी आ रहे हैं 19 को. गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट की जाएगी. हमारे घर में भी गणेश जी आते हैं. तो ये जो गणेश जी की प्रतिमा होती है वो बनती कैसे है? एक साचा होता है या एक मोल्ड होता है जिसके हम लोग अंदर हम मिट्टी डालते हैं, सही बात है, या क्ले डालते हैं. कुछ समय बाद वो मिट्टी या क्ले उस साचे का रूप ले लेगी और आपको एक प्रतिमा मिलती है, एक आइडल मिलता है. यस, नो, गिव मी अ थम्स अप. ओके, Yes. Okay, so I know that we are on the same thing. All right. Now, supposing इस mold में, if I mold में defect है, तो मूर्ति में defect होगा? mold में अगर defect है, मूर्ति में defect होगा? अच्छा, अगर मुझे मूर्ति में defect नहीं चाहिए, तो मुझे repairing कहाँ करना पड़ेगा? You can unmute and tell me. In the mold.
यस, ऑन द मोल्ड। अगर मैंने मोल्ड को नहीं डिफेक्ट ठीक नहीं किया तो मेरी मूर्तियां सब डिफेक्टिव निकलेंगी। बिल्कुल इसी तरह से व्हाट वी जस्ट सॉ आउट हियर, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। ये जो है ये मूर्ति है, हमारा जो फिजिकल विजिबल फिजिकल शरीर है ये मूर्ति है, और ये जो इसके इर्द गिर्द जो आकृतियां दिख रही है, ये जो ऑरा है, ये है हमारा मोल्ड। हम जब भी ट्रीटमेंट पे एम्फेसिस करते हैं, चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट हो, हम केवल इस शरीर को इंपॉर्टेंस देते हैं और इस शरीर को तो पूरी तरह से भूल ही जाते हैं। इसीलिए वी हैव वाइटामिन्स, खाना खाते हैं सब कि भैया ये पंच महाभूत इसको फीड करना है तो अन्नमय कोश है, इसको खाना देंगे, दवा देंगे, फेशियल करेंगे, इसको कपड़ा देंगे, सब कुछ देंगे, इसकी खूब हम लोग ये करते हैं खातिरदारी, है ना। तो दिस बॉडी इज रिजर्व्ड, इट गुड एंड इन टॉप शेप, यस नो। बट वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड नो दैट जैसे इस बॉडी को मेंटेनेंस की जरूरत है, हमारे इस बॉडी को भी मेंटेनेंस की जरूरत है। सपोजिंग यू हैव अ ड्रीम कार, हाँ, आप लोगों की एक ड्रीम कार है, इमेजिन करो, ठीक है। सो वो कार आपको मिल जाती है, अब आप बहुत खुश हो, आप फैमिली वेकेशन पे जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो, एकदम टॉप परफॉर्मिंग कार है, एंड यू गॉट अ वेरी गुड डील, सो वेरी हैप्पी। अभी 1 महीना चलाया, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आपने कार को सर्विसिंग के लिए नहीं भेजा है, तो आपको क्या लगता है उसका परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा या ड्विंडल होता जाएगा, नीचे आता जाएगा या ऊपर जाएगा? नीचे आएगा, है ना, जाहिर है। क्यों? बिकॉज उसकी सर्विसिंग नहीं हुई है, उसकी ग्रीसिंग नहीं हुई है, ऑयलिंग नहीं हुई है, ऑयल चेंज नहीं हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह हमारा ये जो शरीर है, इसका ये जो काउंटर पार्ट है, ये कुछ अलग नहीं है। हम यहाँ पे सर्विसिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, इसको रोज स्नान कराते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, मगर ये जो शरीर है हमारा, जो डिस्टिंक्ट और सेपरेट नहीं बल्कि एक ही है, इसको तो हम पूरी तरह भूल चुके हैं, तो इसकी तो सर्विसिंग ही नहीं होती है। और जब इसकी सर्विसिंग नहीं होती है, तब जाके आजकल तो बहुत जल्दी 25-30 साल में लोगों को हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, नेम द साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, ओसीडीज, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां होने लग गई हैं। क्यों? बिकॉज ये जो शरीर है हमारा, इसकी हमने सर्विसिंग ही नहीं की। क्यों? बिकॉज इसके बारे में अगर अवेयरनेस भी था तो ये समझ में नहीं आता था कि भैया औरों को और चक्र को साफ कैसे करें। जब ये मालूम ही नहीं था, ज्ञान तो था, बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन सबको मालूम है, आभा होता है, ऑरा होता है, चक्र होते हैं, ये हम सब जानते हैं, सही बात है। मगर हम ये नहीं जानते थे कि भैया इसको हम लोग हाथ हिला के भी साफ कर सकते हैं, तो दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी नोज ऑल दिस, सब मालूम है फंडा, मगर उनको ये नहीं मालूम कि भैया इसकी सर्विसिंग कैसे करें और कितना इंपॉर्टेंट इसकी सर्विसिंग है। ठीक है, अभी अंडरस्टैंडिंग। अब चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। तो हमारा एक विजिबल फिजिकल बॉडी है, ठीक उसी तरह ये सूक्ष्म शरीर है, मराठी में इसको जीव द्रव्य शरीर बोलते हैं, हिंदी में इसे ऊर्जा शरीर बोलते हैं या एनर्जी बॉडी, और इंग्लिश में एक और नाम है बायोप्लाज्मिक बॉडी। चलो इसके बारे में सीख लिया, अब देखते हैं तो प्राणा इधर भी रहता है और कहाँ रहता है। ठीक है, फिर से शेयर करूंगी स्क्रीन। जैसे हमारे फिजिकल बॉडी में ऑर्गन्स हैं, अवयव हैं, अंग हैं, जैसे हार्ट, लिवर, लंग, किडनी इत्यादि, हाँ, ब्रेन, आईज, ये सब हैं। तो हमारे जो ऊर्जा शरीर पे उसके काउंटर पार्ट्स क्या हैं? चक्र हैं। तो हमारे योगा सिस्टम में हम लोग ने 7 चक्रों के बारे में बात की है, हाँ, और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे 11 मुख्य चक्र हैं। तो चक्र होते कितने हैं? अनेक होते हैं। चक्र कितने होते हैं? अनेक चक्र हैं सारे शरीर में। तो अच्छा, तो फिर 7 के बारे में क्यों बताते हैं योगा सिस्टम? तो 7 इज व्हाट इज रिवील्ड टू द पब्लिक, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा देयर इज ओनली 7, सो इवन दे नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग। हमारे स्कूल में हम ये 11 चक्रों, मुख्य चक्रों के बारे में जानकारी देते हैं। हर एक मुख्य चक्र आपके एक मेन ऑर्गन को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे सर के अंदर ऊपर जो बीच में क्राउन एरिया है, आप स्क्रीन पे देखेंगे मेरा जहाँ कर्सर है, दिस इज नोन एज द क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र। This controls your pineal gland, your right and left brain, this entire head area. Then यहाँ पे आएंगे throat के बीच में, यहाँ पे is the throat chakra. Center of the chest is the heart chakra, ये जो दिख रहा है. This controls your physical heart, your circulatory system, your thymus gland. तो चक्र होते क्या हैं? चक्र होते हैं पावर स्टेशन। जैसे एक पावर स्टेशन है जहां से एनर्जी की आपूर्ति हो रही है हमारे घर को, ऑफिस को, सब कुछ, है ना। अगर समझो पावर स्टेशन में डिफेक्ट आ गया, शट डाउन हो गया, तो क्या होगा?
तो आप बोलोगे मेरे पास बैटरी बैकअप है, हाँ मेरे पास जनरेटर है, ठीक है चलो जनरेटर यूज कर लिया, बैटरी बैकअप भी यूज कर लिया, उसके बाद क्या, आपको फिर से तो चाहिए बिजली, है ना। तो ये बिल्कुल वैसी पावर स्टेशन होते हैं जो आपके ऑर्गन्स को प्राणा की आपूर्ति करते हैं, जिससे आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं. सो इफ दिस इज द चक्रा and supplying energy to that one vital organ, say supposing the heart, any problem coming in the heart chakra, तो चक्र कैसे होते हैं, they are like a they spin to clockwise and counterclockwise. एक सामने होता है, एक ऐसे पीछे होता है. This makes a chakra. So it goes clockwise and counterclockwise, inhaling exhaling at the same time. All right, are we understanding? तो अब ये अगर व्हील जैसा है और ये घूम रहा है, इसके अंदर कुछ अटक गया, तो ये कितना थोड़ा कहीं ना कहीं बाधित होगा, इसका रोटेशन बाधित होगा, हाँ उसका जो कार्य है वो बाधित होगा. तो जो प्राणा की जो यू नो द amount of energy that was reaching, the prana that was reaching the heart, now the physical heart is going to get affected, the quality and the quantity. Are we understanding this? When this happens, then people have heart problems coming. तो उसके साइंस होंगे, सिग्नल्स होंगे. जैसे आपने देखा सर्दी खांसी होने वाली होती है, छींके भी नहीं हो, खांसे भी नहीं हो, मगर आपको पता लग जाता है कि सर्दी खांसी होने वाली, आप बोलते हो ना मुझे लगता है कुछ होने वाला है. इसका मतलब वो जो एनर्जी है आपकी ऑरा पे और आपके चक्र के बाहर आ चुकी है, एंड इट इज, वो जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं वो आपको बोलती है नॉक नॉक मे आई कम इन. तो अगर आपको मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, अच्छा चलो बीमारी हो जाती है तो खा लेते हैं दवा और फिर ठीक हो जाते हैं, बोलते हैं मेरा सिक्स सेंस इतना अच्छा है, मुझे तो पहले ही पता लग जाता है. बट इफ यू नो दिस साइंस, यू कैन एक्चुअली सेंस द इम्बैलेंस इन योर ऑरा, sense the imbalance in your chakra, remove the imbalance and choose good health. You can empower yourself by learning pranic healing, और आप खुद डिसाइड करोगे that I am going to be healthy and I'm going to be healthy forever. जैसे see सब 24 hours तो सेम नहीं होते, उथल पुथल तो होता है, तो definitely you are not going to be in top shape throughout the day. उथल पुथल होगा और हमको पता भी नहीं लगेगा, स्ट्रेस क्रीप इन हो जाएगा, है ना. एंड स्ट्रेस जैसे क्रीप इन हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी गिर जाएगी. जैसे इम्यूनिटी गिर जाएगी तो ये सारी व्याधियां आना शुरू हो जाती थोड़ी बहुत. Are we understanding? That's why when we get up in the morning, by afternoon we are feeling different, by evening we are feeling different, है ना. Yes or no? So that is showing you the dwindling level of your prana or energy quality and quantity wise. Now how to remain, can we remain top shape in energy quality and quantity throughout the day? That's what we teach. That's what we teach. And we teach you how to clean the aura, how to clean the chakras and remain. अच्छा समझो अगर प्रॉब्लम आ चुका है चक्र के ऊपर और XYZ बीमारी हो गई है, डायबिटीज है, थायराइड है, डिप्रेशन है, या कोई भी है, क्या उसको ठीक कर सकते हैं और वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा? आंसर इज यस. अगर आपका चक्र ठीक हो जाएगा, आपका पावर स्टेशन ठीक हो जाएगा, तो आप वो दवाइयां भी डॉक्टर को जाके रिपोर्ट दिखा दो आफ्टर हीलिंग, वो खुद ही वेरी करेंगे या बंद करेंगे, वो डॉक्टर करेंगे, वो हम नहीं करेंगे. ये ऐसे कैसे होगा? बिकॉज हमारा जो मुख्य चक्र होता है उसका एक साइज होता है 3 to 4 इंचेस. जब इसका साइज या तो बहुत बड़ा हो जाता है या तो बहुत छोटा, मीन्स इट इज नॉट नॉर्मल, तब जाके ये सारी व्याधियां जो मैंने आपको बोला, कैंसर वैंसर और जो आज के प्रिवेलेंट बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं. तो क्या हम लोग एक भरपूर जीवन जी सकते हैं? Have the same lifestyle, not give up anything, and yet be full of life and healthy? The answer is yes. The answer is yes. ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से जैसे आप ये देख रहे हो, सोलर प्लेक्स के बीच में एक एरिया है. कैन यू सी दिस? दिस इज नोन एज अ सोलर प्लेक्सिस एरिया. ये जो सोलर प्लेक्स होता है हमारा, वो डायफ्राम को कंट्रोल करता है, लिवर को कंट्रोल करता है, स्टमक को कंट्रोल करता है, पैनक्रियास को कंट्रोल करता है. यू नो ये दिस इज लाइक अ क्लियरिंग हाउस. जो भी हम जब मेडिटेशन करते हैं, एनर्जी ऊपर से आती है, यहाँ से गुजरती है, नीचे जाती है. एनर्जी ऊपर से आती है, पीछे से भी बैक सोलर है, यहाँ से गुजरती है, नीचे जाती है. अभी बहुत सारे लोगों को ये 1 minute, लेट मी जस्ट स्टॉप. या बहुत सारे लोगों को ये होता है कि बीमारियां आती कैसी हैं, है ना. यस और नो? डू यू वांट टू नो हाउ पीपल गेट डिजीज्ड? यस, नो? ओके, विल टॉक अबाउट इट. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दैविक ऊर्जा से स्नान हो गया, तो हमारा ऑरा साफ हो गया, हमारे चक्र साफ हो गए. क्या होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होता है. जैसे हम स्नान करने जाते हैं, नहाते हैं, साबुन वाबुन लगाते हैं, डू वी गेट क्लीन? ऑफ कोर्स वी गेट क्लीन, है ना. सो देन द थिंग इज, if meditation can cure everything, then why have healing hands on? Do you have this question? Anybody out here?
तो हीलिंग की क्या जरूरत है अगर मेडिटेशन करके हमारा सब फिक्स हो जाएगा? डू यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री विल? गिव मी अ थम्स अप. ओके. Free will is something which even God will not interfere with. The universal mind will also not interfere with. We agree with this? There is something called free will जो universal mind पे interfere नहीं करेगा. Okay. अभी समझो मैं आपको एक सिंपल हमारा नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ. इतनी बड़ी जिंदगी में उथल पुथल हुई है. People have hurt us. We have also hurt people. कुछ लोगों को हमने माफ कर दिया. चलो सबको माफ कर दिया. मगर कुछ लोगों को भूले नहीं है. हम मन में सोचते हैं it was their fault. I forgave. Not my mistake. Yes or no? Give me a thumbs up. Yes or no? तो हमारी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई बंदा है कि भैया हमने माफ तो कर दिया मगर कहीं ना कहीं लगता है गलती मेरी तो नहीं थी, चल मैंने तो माफ कर दिया. सो आई हैव फॉरगिवन बट नॉट फॉरगॉटन. दैट मीन्स द कंप्लीट फॉरगिवनेस इज नॉट हैपेंड. ना हाउ एंड व्हाई. सो कहीं ना कहीं वो दिल में वो ये रह जाता है कि भैया इट वाज नॉट माय फॉल्ट. व्हाई डिड दैट हैपन टू मी? आई एम सच अ गुड पर्सन. और कहीं ना कहीं ये होता है व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल. हाउ मेनी पीपल हैव दिस क्वेश्चन? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? Only one person has that question. Any? Let me see a raise of hands. नहीं तो फिर then I'll say okay, maybe next time. Okay, ठीक है. ये है हमारा universal mind. Okay. We call it Ram, we call it Allah, we call it Krishna, we call it anything. एक ही चीज मालूम है भगवान जी को and that is तथास्तु. So be it. Okay. अभी एक बताती हूँ. एक सिनारियो विजुअलाइज करो. एक किसान है जिसके पास खेती है. उसको समझो गेहूं चाहिए. ठीक है. तो वो क्या करेगा? पहले खेती को साफ करेगा और फिर गेहूं बोएगा ताकि उसको फसल जो मिलेगी वो वीट मिलेगी. यस और नो? यस नो? ओके. नाउ समटाइम्स माय स्टूडेंट्स व्हेन आई टीच देम दे कम टू मी एंड समटाइम्स एंड दे से यू नो मैम आई डिड एवरीथिंग मगर कुछ हो नहीं रहा है. सो यू नो व्हाट दे आर सेइंग? दे एक्चुअली टेलिंग मी आई प्लांटेड ऑरेंजेस एंड आई एम गेटिंग एप्पल्स. इट्स नॉट फेयर. I planted orange and I'm getting apples. That is what they're saying. जब हम बोलते हैं ना अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, this is what is happening. Okay. तो हमारी खेती क्या है? हमारी जो खेती है वो हमारी ऑरा है और हमारे चक्र हैं. ठीक है. और हमारे सीड्स क्या हैं? बीज क्या हैं? हमारे थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स. ओके. बट आई एम गुड. जनरली आई डू माई ब्रीदिंग, आई डू माई एक्सरसाइज. मैं मेरे काम से काम रखती हूँ, मेरा घरदार देखती हूँ, सब देखती हूँ और आई एम डूइंग एवरीथिंग. वी ऑल डू. वी जनरली आर वेरी गुड. बट यू नो बाय डिफॉल्ट हम अपने आप को sabotage कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? Now remember I told you about that chakra, solar plexus in the hollow area below the ribs. That is a seat of emotion. Heart chakra, seat of higher emotions. Solar plexus, seat of lower emotions. Heart chakra is the V center. हमारा क्या? मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे दोस्त. Love for people whom you know. Solar plexus is I center. It's like मेरा क्या? Healthy self-interest, which is very good and very important for manifesting anything. It's like, you know, if I do this job, what am I getting? है ना? कोई काम करने जाता है बोलते हो ना, चलो मैंने सेशन किया, मुझे कितना मिलने वाला है? You don't say, okay, I'll just do the session. है ना? I learned this art and I'm just going to do sessions for free. You are going to be investing your life, your time, a place, a rent, everything, right? Yes or no? So there's healthy self-interest. So you charge whatever. Same thing. Not selfish interest. Abhi lower emotions, these are good ones. Not so good ones, sare lower emotions. Stress, tension, anxiety, vindictiveness, anger, hatred, pride, jealousy, enviousness, greed. ये by default solar plex में रहते हैं. By default. Okay? रहते नहीं है, हम उनको बनाते हैं वहाँ पे. ये रहते नहीं है वहाँ पे. All right, it's like this. Supposing someone hurt me. When I entered Pranic healing, I had someone, if the law of the land forgives, not actually, but इतना गुस्सा था कि मैं नहीं चाहती थी that person should exist on this planet Earth also. All right. तो फिर what was my mental and emotional states? Forgiven, not forgotten. तो mentally एक कैसेट चल रहा है. मेरी गलती नहीं थी, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है. दूसरे दिन उठ के सोचती थी, आज से नहीं सोचूंगी, आज से बिल्कुल नहीं. That chapter is over and gone. 30 seconds में फिर से वही, अगर मैं अकेली हूँ, वो मेरे दिमाग में फिर से चालू हो जाता था. होता है आप लोगों के साथ ऐसे? No matter what we do, we still go back to that. है ना? How right I was and how I am the one who's suffering for no fault of mine. Yes or no? तो ऐसे कैसेट सबके दिमाग में कोई ना कोई किसी ना किसी सिचुएशन, पर्सन, थिंग के बारे में होता है. ठीक है. तो इससे होता क्या है? नाउ
If the aura is your aura and chakra is your kheti, and your thoughts, emotion, and feelings are the seeds. Okay, if someone got hurt or I got hurt, and if I hold anger, if not even anger, complain, sadness, grief, trauma, pain, anguish, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इतनी अच्छी, मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था, मैंने तो उसको चलो छोड़ दिया, उससे मैं बात भी नहीं करती, उसके बारे में बुरा भी नहीं सोचती, but I am going in a downward spiral and I'm thinking, why did this happen to me? So I've got complaining, I've got grief, I've got sadness, I've got the sense of being wronged, okay, which is right now because I went through all of that. So there's so much trauma and pain over there. Now this is the universal mind, and they say what goes out, look here, what goes out comes back to you many, many times. What are the signals going out from my aura and chakras, which are my thoughts and feelings into the universe? Trauma, pain, anguish, complaint, regret, excessive remorse, complaint, constant that cassette is playing. So the universal mind looks and says, oh, is this what you desire? So be it. Now you'll have more person, no more situation, more people, and more things in a repetitive format or a pattern forming in your life, and you'll say, my God, no matter what I do, this is where I land up. चाहे वो relationship में हो, पैसे में हो, किसी चीज में भी हो. We all have these patterns, and we need to learn how to break them. Are we understanding this? Now I'll give you the reason ये कहाँ रहता है ये एनर्जी और क्यों नहीं जाता है, चाहे हम मेडिटेट कर लें, कुछ भी कर लें. अब यूनिवर्सल माइंड को मालूम है कि ये गलत है, मगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो वो भी नहीं निकाल सकते. Something, if we don't have awareness that this is a disease, this is a problem, can I remove the problem? Can the meditation remove the problem? No, it will interfere with your free will. Yes, no, we'll feel peaceful, we'll feel nice for some time, we'll feel blissful, but then we go back to the same after a couple of hours. Yes or no? हाँ या नहीं? Nod if yes or no. That's where the thing lies. And I'll just take you to the chakra. So how does Pranic healing address this problem of forgetting and forgiving and breaking these patterns? Why? Because they are there in your chakra. Basic and advanced talk about the physical functions of the chakra. Psychotherapy talks about mindset changes. जब तक इंसान का mind change नहीं होगा, आपकी बीमारी आपका mind बनाता है. So pranic healing is about cultivating mindset changes. Let me just bring that chakra ka slide up and I'll talk more about it. So if you see this, generally when we talk about chakra, people are only talking about the face of the chakra. The chakra is actually like an ice cream cone. Can you see this conical structure? ये जो middle में बीच में जो central channel है, ये सुषुम्ना नाड़ी है. तो our chakras are rooted on the सुषुम्ना नाड़ी out here. So in basic and advanced we teach you about the energy level कैसे normal करना है, उस चक्र का आकार कैसे normal करना है. तो इससे होगा क्या, इससे आपकी physical बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी. चूम अंतर, reports सब normal. Okay, time taken will differ from person to person. Okay, now psychotherapy क्या बोलेगा? Psychotherapy उसका जड़ या उसका root cause बताएगा कि ये बीमारी इस इंसान को आई क्यों. अगर समझो किसी को डायबिटीज है, या किसी को कैटरैक्ट हुआ है, या किसी को थायराइड हुआ है, हाइपर नहीं हाइपो हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों हुआ, तो ये सारी चीजें क्यों हैं, वो उसका जड़ यहाँ रहता है अंदर. सो व्हाट इज साइकोथेरेपी? सो प्राणिक हीलिंग में बेसिक एडवांस आर टॉकिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द एनर्जी बॉडी एंड द चक्रास. साइकोथेरेपी talks about the anatomy of a chakra and takes you inside the structure and teaches you what are the structures inside. और ये trauma, pain, anguish, चाहे इस जन्म का हो या कोई भी जन्म का, उसको कैसे निकालें. कुछ पैटर्न्स लाए हैं, कुछ टेंडेंसीज लाए हैं, कुछ आदतें लाए हैं, उसको कैसे निकालना है. दैट इज वी हैव टू जर्नी इनसाइड द चक्रा, which is also known as the subconscious mind. So when you want to reboot your subconscious or the physical subconscious, that is what we teach in pranic healing. How to reboot, reset your subconscious. What is the physical subconscious mind? It is your aura, your subtle bodies, your chakra, your organs, and your cell. That is the physical subconscious mind. Till you don't have awareness about a problem, you cannot remove it. Because when I counsel people and I tell them, you know, आपको ये माफी की प्रार्थना करनी नहीं, आपको मालूम नहीं इसने मेरे साथ क्या किया था. I just cannot forget. I just cannot forgive. So you're justifying that anger. You're justifying that hurt. तो जब तक आप वो छोड़ने तैयार नहीं हो, मैं भी नहीं निकाल सकती और कोई और भी नहीं निकाल सकता. वो उतने ही हद तक निकलेगा जितने हद तक आप उसको छोड़ना चाहोगे या निकालना चाहोगे.
Even if God Almighty comes here, cannot remove because of free will. You are justifying that, you are holding on. अब वो बैसाखी है, वो clutch है on which you're standing. Are we understanding? Some people say, I am angry, I'm like this because ये लोग ऐसे 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 हैं. मतलब वो आपके बैसाखी हैं. That is pride. You're standing on certain things. I cannot take your clutches away. You will fall down. So you cannot make people see their problem and say, no, you know, you have this problem till they are not ready. So we give them the meditation, we give them the forgiveness prayer, we teach them healing, we tell them come to the class, and then dhire, 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 we make them see the problem. And they say, oh yeah, really? How do I know this? I was one of them. I was one of them. मैं प्राणिक हीलिंग में इसलिए आई बिकॉज मैं हाई बीपी का इलाज ढूंढ रही थी मेरे पति के लिए. हम दोनों लॉयर्स हैं. अब लॉयर्स की जीवन कैसे होती है और आप लोग लॉयर्स के बारे में क्या सोचते हैं ये मैं भी जानती हूँ बिकॉज इवन आई वाज अ लॉयर वंस. सो यू कैन इमेजिन इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल था. एंड मेरी योगा टीचर ने मुझे प्राणिक हीलिंग में इंट्रोड्यूस किया. बेसिक एडवांस करके मेरा ये था कि फिजिकल प्रॉब्लम ठीक हो गया, क्यों करना है साइकोथेरेपी. तो उन्होंने कहा भैया आपको तो रूट कॉज पता होना चाहिए कि ये बीमारी आई क्यों. जब तक वो जड़ से नहीं निकालोगे ये फिर से आ जाएगी. तो आपको उसका जड़ मालूम होना चाहिए कि क्या है, तब जाके वो बीमारी लौट के नहीं आएगी. तो फिर हम लोग गए और क्लास कर दिया, बेसिक एडवांस साइकोथेरेपी किया. साइकोथेरेपी क्लास वाज द ओनली क्लास वेयर आई थॉट प्राणिक हीलिंग वाज फॉर मी. तब तक ये था कि क्लास में बैठ के मेरे हस्बैंड को मैं डांट रही थी, बोला तुम ठीक से सीख लो, तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम कर लो, यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. साइकोथेरेपी वाज लाइक अ मिरर टू मी. It was like a mirror to me. I hold 2 master's degree, one in law and one in masters of economics. So I taught economics while I was studying law. I practiced law for 10 years. I was not happy with what I was doing. मुझे ऐसा लग रहा था जिंदगी में और भी बहुत कुछ है और मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है. You know, when we are in college हम सोचते हैं कि चलो ये कर लेंगे वो कर लेंगे. जब आप एक्चुअली जाते हो प्रोफेशन में आपको पता लगता है वो टोटल डिफरेंट बॉल गेम है. Then you come to know, oh, I don't want to compromise with my principles. You can imagine when I came into pranic healing after 10 years of law practice, I was filled up to my neck, irritated, angry, frustrated. ऐसा लगता था दूसरा जन्म लेना पड़ेगा कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए. 2 मास्टर्स डिग्री करके मेरे को ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना है. टीचिंग तो बिल्कुल नहीं करना था, you know. But the gurus and higher beings had different plans. Here I am teaching pranic healing, no regrets, very grateful that they have me and they think me worthy to teach. So it's a different high when I teach. जब मैं प्राणिक हीलिंग में आई, हीलिंग कर रही थी, मेडिटेशन सिखा रही थी, लोग आ रहे थे, सब लोग कह रहे थे आप आओ, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप आके सिखाओ. मैंने बोला नहीं भैया, मैं लॉयर ही ठीक हूँ, आप लोग पढ़ाओ, मैं स्टूडेंट्स को भेजूंगी बिकॉज मुझे फायदा हुआ, मैं सबको बताऊंगी. 1-1.5 साल हीलिंग करने के बाद मैंने देखा कि बीमारी तो चली गई संजय की. उसके बाद हमारी लाइफ, हमारे रिलेशंस और जो इससे मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी वो सारी चीजें बदल गई. कैसे? दे से बी द चेंज यू वांट टू सी. बी द चेंज यू वांट टू सी. तो हमको लगता है हम जब हीलिंग करते हैं मेडिटेशन ना, वो सामना हम जाके फिर मेरे स्टूडेंट्स भी जब आके बोलते हैं ना मैम मेरी सास बहुत अच्छी हो गई. So I smile because that is exactly what I would go and tell my trainers. And I had fantastic trainers and fantastic mentors, you know. And I'm so grateful to them कि आज मैं, you know, whatever I'm doing today is a service to humanity, and this is one way of giving back to our nation and to humanity as well, you know. I'm a daughter of a naval officer. ये जज्बा तो हमेशा से था कि अपने देश के लिए कुछ करना है. But with God's grace we got an opportunity to serve humanity, and I think that's the best profession. So जब मैं पहली बार यहाँ आई, my dad blew a stop. बाबागिरी में जा रही है. What is this you're doing? You've got Flora Fountain में ऑफिस है, इतने सारे client list हैं और अभी तुम जाके ये सब सिखाने वाली हो. I said, Baba, even you feel good when I heal you. He said, वो सब ठीक है, you know. And that in those days, you know, pranic healing cost around 3,000 something. So you can imagine how much a trainer would get at that point of time. And one adjournment in that time was very cheap, but आज 25,000 for one adjournment in Bombay High Court at that point of time. So you can imagine if you compare the economics, my dad was like, everybody in my family, like, you know, 2 master's degree करके क्या कर रही हो तुम, you know. But I knew how beautifully my life had touched, and it brought about a sea change, you know, in my perspective towards life. I became more flexible and adaptable. That is what I can say. And when I realized after healing for 1.5 years for free, मेरे सामने जो भी बैठता था, बड़ा बूढ़ा बच्चा जो भी, सबकी एक ही कहानी थी. नाम बदल रहे थे, जगह बदल रही थी, मगर सामने प्रॉब्लम वही था.
चाहे वो रिलेशनशिप का हो, हेल्थ का हो, जॉब का हो. And I said, oh my God, they're going through the same thing that I went through. So in general, I said, why not teach this to the people of India? और आप और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग जब तक इसमें आते नहीं हैं और ये आज से हम लोगों को नहीं सिखाते, तब तक ये पूरे दुनिया में नमस्कार टू चमत्कार चलता रहेगा. हमको लोगों को साइंस सिखाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है और उनको सेल्फ एम्पावर करना है थ्रू द टीचर्स. इसी टॉक पे मैं यहाँ पे रुकूंगी बिकॉज ये सेशन और बड़ा हो जाएगा. मेरे पास काफी सारे स्लाइड्स हैं, मगर यू हैव क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. इट्स 9 and I don't want to take that time away. Maybe if you all want me again, you can tell Trupti ji and we'll come for a different session, and I'm open to question and answers now. Thank you. Thank you, Santosh ji. Thank you, Trupti ji. ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इंसान सुनता ही रहे. मेरे पास बहुत है, मगर maybe some next other time. Because there is so much and it kind of resonates with all of us also. So इसीलिए, you can go on and we can keep listening. But of course, we'd love you to come again. But फिलहाल questions I think ले सकते हैं हम. So anybody has questions, आप chat पे डाल सकते हैं, तो संतोष जी भी उसे सुन सकते, read कर सकते हैं. So हाँ जी, please go on with your questions. So यहाँ पे Vaidehi is saying, I want to learn pranic healing. How? I'm in Coimbatore, Tamil Nadu. So you can go to World Pranic Healing India website. इंडिया में जहाँ पर भी हिंदुस्तान में जहाँ पर भी प्रानिक हीलिंग के ऑथोराइज सेंटर्स हैं, आप वहाँ पे आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा और उनके ईमेल आईडीज और फोन नंबर्स जाएंगे उस स्टेट के. एंड यू कैन सेफली गो एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू अ ऑथराइज्ड पर्सन ओनली. ऑलराइट. Rahul, go ahead. Thank you, Santosh ji. Yes, Rahul. I just wanted to ask, what is free will according to pranic healing? According to pranic healing, it's the same thing like जो आपका और हमारा है. एक वो होता है जो जैसे लोगों को लगता है कि ये सब कुछ हो क्यों नहीं रहा है. हम लोग जब अंदर से सोचते हैं कि और किसी चीज को जस्टिफाई करते हैं, free will is something that you want and you believe, that is your belief system कि ये सही है, ये गलत है. जो आप जो सोचते हो सही गलत है, वो आपका सही गलत है. Yes or no? Without judgment, okay? तो हम लोग एज अ हीलर हमको मालूम है कि अच्छा ये गलत है, इस बंदे को ये चीज छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे उसको माफी की जरूरत है, यहाँ पे ये लेट गो करना चाहिए. पर वो बोलता है नो, नहीं आपको मालूम नहीं मेरे साथ क्या हुआ. तो हम लोग उनको उतना टाइम देते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं. तो मैं क्या करती हूँ, आई टेल यू, when such a person comes to me where the person is not even facing the problem, in a sense there's no awareness cultivated. तो कैसा होता है, जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि भैया ये बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है, तब तक तो आपके लिए वो एसेट है, तब तक के लिए आपके लिए तो यू आर नॉट बीमार. मेरी बात करती हूँ, जब मैं प्रानिक हीलिंग में आई थॉट आई वाज द बेस्ट. 2 master's degree, married the guy my dad said, doing wonderful in my profession, in the worldly terms, having the top client list in Mumbai. And internally what I was, I know. When I came to pranic healing, I got to know that I was judgmental, critical, my way or the highway, filled with pride, and I really needed to step back. ये क्यों हुआ? मैं एक फौजी बैकग्राउंड से आती हूँ, जहाँ पे मैंने सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखा है और मैंने हिंदुस्तान देखा है. जब मैं बाहर आई और मैं कॉलेज गई, आई वेंट टू केसी कॉलेज, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ केसी कॉलेज. एंड हाथ मिलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं. तो मैंने बोला मेरा नाम तिवारी था, संतोष तिवारी. तो मैंने बोला मेरा नाम संतोष तिवारी. तो समवन जस्ट सेड, ओ यू आर अ भैया. तो मुझे तो मालूम नहीं भैया क्या है. आई हैव लिव्ड इन अ cocoon in armed forces background. So I said, no, my name is Santosh Tiwari. And he said, oh, you're a भैया. तो मुझे तो समझा नहीं. मैंने कहा चलो चुप रहते हैं, मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं. घर गई, मेरे डैडी ऑफिस से आए, मैंने डैडी को बोला बाबा आज मैं कॉलेज गई और मैंने बोला मेरा नाम संतोष तिवारी. एंड दे सेड you're a भैया. What is a भैया बाबा? I'm in 11th. And my dad said, अच्छा बेटा, you met the real India today. Then I got to know what they meant and how derogatory they mean when they are saying that. I felt so bad. I said, and that filled me with rage, anger, and I became, एक तो anger आ गया, एक तो गुस्सा आ गया, और then ऐसा हुआ कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये लोग, इनको इतना नहीं समझता, हिंदुस्तान एक है, ये वो कोई, and then फिर वो अंदर बैठ गया मेरे. When I went to a pranic healing class and I learned Twin Hearts meditation, I understood one thing: you have to be the change you want to see.
I was highly judgmental and critical about the people of India for being so divisive. But then when I went there and I healed myself, मुझे एक चीज पता लग गया, they did not have the same beginning I had. They did not have the same, cushioned environment that I had. They were exposed to all the things right from the growing up in a civilian life. It is not very cushioned. और जब ये awareness मेरे अंदर cultivate हुआ, then I knew that what I was justifying anger and judgmental and critical attitude towards the people of India, I had to change that if I want to change their perspective and their viewpoint. तो उस दिन मुझे ये realization आया कि I was wrong in being judgmental and critical about the people if they are saying that. तो that is what I mean, you know, कि जब तक मैं नहीं छोड़ूं, वो एंगर कोई नहीं निकाल सकता. मैं बोलती भैया मेरा डैडी बॉर्डर पे लड़ रहा है और आप लोग आपस में लड़ रहे हो, मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ नहीं हूँ. मगर ये कब आया मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग, और ये लाइट कब आई, ये प्रकाश कब हुआ, ये नॉलेज कब आया? जब मैंने वो अंधकार को निकाला, जब वो अज्ञानता को महसूस किया कि भैया ये एक तरह का रिजिडिटी है, और जब तक आप इसको लेट गो नहीं करोगे, यू आर नॉट फ्लोइंग, योर सोल एनर्जी इज स्टिल इनहिबिटेड, है ना? एंड डिजीज इज नथिंग बट inhibition of the free flow soul energy through your body, as per Alice Bailey. So this is what is free will. जब तक आप खुद नहीं छोड़ते हो, कोई कुछ नहीं निकाल सकता. That is free will according to me. Sorry, what is bhaiya? I didn't get. I actually कैसे in India generally लोग जो यूपी बिहार से होते हैं ना, जैसे दूध वाले सब भैया होते थे, तो you know, okay. Yeah, so some people say it प्यार से and some people put it in a downright fashion. So I got to know it, and today even you got enlightened. See, one more thing. So I'm also from UP, so उसमें All right, I hope I answered your question, Rahul. Okay. Thank you for your question. Anybody else? Atma Namaste, Santoshi and Dr. Trupti. I actually resonated with your experience of getting into pranic healing. Like I have myself, I'm a student of science. Then I did my computer science. I taught computer science for 2 years. Wow. And 5 years back, I landed into pranic healing. All right. And now I'm pursuing my CPH, completed my ACPH last year. Lovely. Where are you located, Gauri? I'm at Delhi. Acha. And you know, I used to think like I stopped telling my qualification to people some time back. No, you because must tell them. You like, must tell them. you are a science graduate, then you know, you have done computer science, and then you have done pharmacy. What are you doing in life? Where do you want to go? Where do you want to land up? And you I'm know, truly a science student. and I'm so grateful on the same platform I have Dr. Trupti and you both, and grateful to both of you. Thank you so much. Thank you for your sharing. Anybody else? Yeah, Gauri, go ahead. But Hello, ma'am. raise your hand. Yeah. Hi, Gauri. Yeah, hello, ma'am. Yes, hello. Yeah, first of all, it's such a lovely. Can you hear me? Yes, loud and clear. Hello. Yeah. हाँ, echo है मगर हम सुन पा रहे हैं. हाँ. First of all, I could resonate with everything that you were saying. So I just have one question, which even Trupti ma'am said in the beginning. Like when a client asks you, like, you know, how long does the healing last? You know, after the healing is done. So for those clients, how do you answer them? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन गौरी. बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है एक हीलर के लिए. जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, ऑफ कोर्स उनका सबसे पहला क्वेश्चन इन द फर्स्ट मीटिंग इज कितने सेशन लगेंगे, कितनी लंबी हीलिंग चलेगी, क्या ये पूरी तरह से ठीक होगा या नहीं, वापस तो नहीं आ जाएगा. तो मैं देयर आर 8 पॉइंट्स ऑन व्हिच वी काउंसल देम, यू नो, इन एडवांस प्रानिक हीलिंग. देयर इज अ प्रिवेंटिव प्रानिक हीलिंग, एक चैप्टर है हमारे बुक में जहां वो हमारे लिए भी है टू कीप आवर एनर्जी बॉडी सटल एज हीलर्स एंड ऑल्सो फॉर द पेशेंट. तो पेशेंट्स को मैं वो 8 पॉइंट्स पे काउंसल करती हूँ. टू नेम अ फ्यू इज समथिंग लाइक योर हाइजीन, एथरिक हाइजीन और एनर्जी हाइजीन. सो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, उनके फूड हैबिट्स, उनको मैं पूछती हूँ उनका दिनचर्या कैसे है. सो दे टेल मी कि इतने बजे उठते हैं, कब खाते हो, क्या करते हो, कैसे सोते हो, क्या लाइफस्टाइल है. सो आई सी इफ देयर आर एनी एक्सेसिव, इज देयर मॉडरेशन इन देयर लाइफ, इमोशंस, थॉट्स, you know. Then usually what I do is when someone comes to me, I don't meet them straight away first. I ask them to write a mail to me and I tell them to write about their life and send their reports and scan. And if I need anything additional, again, I ask them to write on those topics. So when I meet them for the first time, I have a very deep background and we can focus on the issue, you know, थोड़ा बहुत जो समझ में आया, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं.
उसमें मैं आई काउंसल देम ऑन दोज पॉइंट्स एंड आई टेल देम व्हेन आई डू हीलिंग हम लोग हमेशा सोचते हैं हीलर हीलिंग कर रहा है. The patient Yes. mind created the problem and the patient is the healer. We are only assisting. Are we understanding this? हमको एक बहुत क्लियर ये होना चाहिए कि जब तक ये इंसान ठीक नहीं होना चाहता वो ठीक नहीं हो सकता. That is why I said it's about creating mindset changes and that is what I work and strive towards. So what I teach them is certain breathing things. हमारे इसमें breathing techniques हैं. उससे क्या होता है? उससे फायदा ये होता है ना, tell them. जैसे साथ हीलिंग हो जाते हैं, बोलती बेसिक क्लास करो तो तुमको पता लगेगा कि मैं इन चीजों पे एम्फेसिस क्यों दे रही हूँ. वाई आधो काम मैं कर रही हूँ. मेरी तरफ से एक ही प्रोटोकॉल है. आप डायबिटीज का प्रॉब्लम लेके आओ, मैं हर डायबिटीज के पेशेंट के ऊपर वही प्रोटोकॉल करूंगी. तो कोई बंदा 1 महीने में ठीक होता है, किसी कोई 6 महीने में होता है, कोई 3 महीने में होता है. तो वाई द टाइम डिफरेंस इज बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट. सो द टाइम टेकन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, है ना. और वो बीमारी का कारण क्या है. सो आइडेंटिफाइंग द कॉज, treating the cause and asking them to help me. So आधा रास्ता मैं आती हूँ, आधा रास्ता आप आओ. If you don't traverse that path and come halfway, I will still be on healing number 1 even after 3 months. क्यों? Right. Are we understanding? So I tell Yes. them in the first meeting, अगर मैंने आपको बोला ये ब्रीदिंग आपको दिन में 3 दफा करनी है, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि उनकी ऑरा और चक्र में जो भी इधर उधर से उथल पुथल आता है, चाहे खुद से आता है, फैमिली से, स्ट्रेस या ऑफिस से, कहीं से कुछ भी आता है, the effect of that breathing is it clears certain major chakras which are connected with thinking and emotions, and the aura also get cleansed and packed with fresh prana and fresh energy. So जैसे अगर हम सुबह शुरू करते हैं, आप दोपहर को before meals, so I teach them before breakfast, before lunch and before dinner. These are the 3 things compulsory and I tell them मैं स्कैन करके पता लगा सकती हूँ कि जैसे मैंने आपको साफ भेजा था, आप उतने उस if not more, come at least that much cleaner. Otherwise you're on day 1. Then don't ask me after 14 healings कि मेरा report change क्यों नहीं हुआ. And you cannot lie to me because मैं scan करके पता लगा लूंगी. Scanning is a technique by which you can find out the energy in the chakra and the aura. Is it clean and stable? Has the healing progressed or has it retrogressed? तो कोई भी पेशेंट हमसे झूठ नहीं बोल सकता. Then they'll say, yeah man, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने यहाँ चीटिंग किया. तो ये पता लग जाता है. Then I just tell them अगर पैसे ज्यादा हो गए तो बोल दो. Then don't ask me कि इतना हीलिंग के बाद क्यों नहीं हुआ रिजल्ट. आपको खुद मालूम है. So we counsel them on certain points and we tell them ये आपको करना है तो ये हीलिंग अच्छी तरह और फास्ट चलेगी. एंड कोई भी दवाइयां हैं, थेरेपीज हैं, तो हम उनको बोलते हैं उसको बिल्कुल बंद नहीं करना. Pranic healing is a complementary science. We focus on the energy body, physical body, the doctors and the other medicines take care of it. So we strictly tell them don't stop them. Let the doctor, then और उनको हम prompt करते हैं 1 महीने बाद जाओ और देखो. So जब 1 महीने बाद वो indicators देखते हैं कि normal होने लग गए हैं, उनको खुद ही वो it's a physical confirmation to them. Yes, money is going in the right place and उतना ही receptivity patient का बढ़ जाता है. तो फिर उनको बताते हैं कि भैया ये follow नहीं करोगे. जैसे स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, पीपल से एक फैग लेने से क्या होता है, एक पैग लेने से क्या होता है. यू वांट टू नो व्हाट हैपेंस विद 1 फैग? सोशल स्मोकर्स, एक फैग लेने से आपके ऑरा के ऊपर बहुत बड़ा क्रैक हो जाता है. नाउ देयर आर एनर्जीज इन द एनर्जी वर्ल्ड. यस, नो? सो व्हेन यू कम टू साइकोथेरेपी आई विल इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ द बीइंग्स आल्सो. सो इन साइकोथेरेपी में हमको बताती हूँ कि ये जो एंटिटीज होते हैं, जो ये होते हैं, वो आपके चक्र के अंदर जाते हैं और चक्र का जो स्ट्रक्चर है अंदर वाला, उसको पूरी तरह से डैमेज करते हैं. और जब ये पूरा अंदर जाके आपके रूट पे पहुंच जाते हैं, तब जाके लोग साइकोटिक्स बनते हैं, स्किजोफ्रेनिक्स बनते हैं एंड मोर. तो जब तक वो प्रॉब्लम ऑरा में है वो आपको कम इफेक्ट करता है. जब वो चक्र के सरफेस पे है वो ज्यादा इफेक्ट करता है. जब वो अंदर चला जाता है और डैमेज कर देता है तो और ज्यादा. तो हेलुसिनेशंस होते हैं, ऑडिटरी होते हैं, विजुअल होते हैं. क्या ये ठीक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी हैव हील्ड दीस थिंग्स. डजंट टेक मोर देन 1 or 2 हीलिंग्स और हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग स्टैंडिंग इट, व्हाट कॉज द प्रॉब्लम. सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट, यू ट्रीट द इशू and you make the chakra wholesome. They stop seeing, they stop listening. Are we understanding? If you don't do that, then ये अंदर जाता है वो root से, then it travels up and down. Are we understanding this? So that is how healing. तो कितना permanent होगा उनको हम पहले healing में बता देते हैं. We leave it to them. ये आपको follow करना है, ये मैं कर रही हूँ, ये साथ में मिलेगा, 100% healing done. Then I am giving you guarantee इतने इसमें हो जाएगा और हर महीने रिपोर्ट निकालो और आप खुद देखो आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो. So any healer, to become a very good healer, should have a structured approach.
जैसे प्राणिक हीलिंग में भी लाइक गौरी जी ने बोला उन्होंने सर्टिफाइड प्राणिक हीलिंग किया है. I myself am a certified pranic healer. We are still getting certified for higher levels as well. Why should one go and learn any science in a structured manner? Because एक होता है क्लास में आप जाते हो, अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिल लिया, ठीक है, आपको टेक्निक आ गई, आप कर सकते हो, सब हो जाएगा. बट जब आप किसी चीज को स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक साइंस की तरह पढ़ते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होती है. जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होती है, उसका अवेयरनेस अलग होता है, तब जब आप उस साइंस को यूज करते हो, आपका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल अलग होता है. It's nothing to do with years of practice in that field. Of course, they have been there, तो इसलिए उनका अंडरस्टैंडिंग डीप हो गया. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैम आप 10 साल से कर रहे हो, मैम आप 5 साल से कर रहे हो, इसलिए हो रहा है. बिल्कुल नहीं. जब लोग साइकोथेरेपी क्लास में पहली बारी प्रैक्टिस करते हैं, they do it on themselves and they say wow, we are blissing out, you know, it's pin drop silence. मैं उनको वही बोलती हूँ, तो शोर कहाँ है? बाहर है. बाहर है? नहीं है. इट इज इनसाइड. आई सेड अभी वो ट्रक नीचे से जा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं कर रहा है. कुछ देर पहले क्वेश्चंस थे, उतने क्वेश्चंस हैं? नहीं है. इट्स लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस. एनी क्वेश्चंस? Yes, chat में there's a question if you Yeah. can read. स्वाति. नीता, माय कांटेक्ट नंबर एंड ऑल तृप्ति जी डाल देंगे, आप उसे ले लेना. And I feel it's because of a few people of my family relatives. I feel bad. These bad memories stored somewhere in subconscious. Thank you for your question, Swati. I'll love to answer this. So as I said, when I came into pranic healing, the person with whom I had issues definitely relative ही हैं. I would do healing. ठीक है, मैं healing करती थी, blessing करती थी, जो करना है सब meditation करती थी, सब करती थी. तो जब भी मैं सोचती थी ठीक है, हो गया, खत्म हो गया, अब you know शांति है and all. Every time I thought that, the moment the person came in front of me, अब relative हैं तो सामने आएंगे, तो फिर से अंदर, अब तो sophisticated हो गए, अब तो healing कर ली, तो अब बाहर से कुछ नहीं था, मगर अंदर से बहुत उथल पुथल होती थी. तो फिर एक दौर ऐसा भी आया कि अब अंदर भी कुछ नहीं हो रहा था, मगर फिर भी you know the presence of that person still bothered. I would rather not see her. Healing करते गए. हम लोग अरहातिक योगा रिट्रीट होता है, जो दैट इज द स्पिरिचुअल साइड ऑफ अ स्कूल, अरहातिक योगा. उस रिट्रीट में हमारे जो टीचर हैं, ग्रैंड मास्टर फॉरगिवनेस प्रेयर पे एक वीडियो चल रहा था और मास्टर हमसे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अ पर्सन ऑफ स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर फॉरगिव्स एंड फॉरगेट्स. हाँ, आप कितने साथ इस इंसान के साथ कितने जन्मों तक आप पैदा होना चाहोगे साथ में. इट्स एंड ही सेड, इट्स लुक एट दिस, इफ टू पीपल लव ना, ऐसे होता है, इवन इफ वन पर्सन स्टॉप्स लविंग, it is still love, but hatred chains two souls together. एक लिंक जैसा होता है, तो you have to forgive and forget. One person has to forgive and forget, तो वो चेन टूटेगा. मगर हमेशा हम लोग ये बोलते हैं ठीक है चलो मेरी गलती नहीं थी, मैंने छोड़ दिया, मगर उसका क्या? ये सवाल होता है कि नहीं? रेज योर हैंड, yes or no. उसका क्या? ये तो रहता ही है अंदर हमारे दिमाग में, हमारे दिल में. ओके, उसका क्या का मतलब मालूम क्या होता है एक्चुअली? उसका मतलब ये होता है कि इसने मुझे ऐसे 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 किया ना, means this person troubled me, I also want to see this happening. So then the students say, no ma'am, we don't want that, we don't want that. Then why are you holding on to that? Easier said than done. So sometimes people say, ma'am, you don't know what I'm going through. Of course I'm not going to tell my whole life story over there, right? So but I tell them I went through the same thing and that's what I did. तो मैं जब प्राणिक हीलिंग करती थी और फॉरगिवनेस प्रेयर करती थी, मैं 4 कदम आगे चलती थी, फॉरगिवन फॉरगॉटन, और हीलिंग होने के बाद मैं सोचती थी मगर मेरी तो गलती नहीं है, यानी आई टुक 2 स्टेप्स बैक. सो 2 स्टेप आगे, 4 लेने के बाद में 2 स्टेप पीछे आ जाती. द मोमेंट यू थिंक दैट यू ऑलरेडी यू नो होल्ड ऑन टू सर्टेन थिंग्स. दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम. और उस वीडियो में मास्टर ने एक और बात बोली. मास्टर सेड, थिंक हु योर चिल्ड्रन आर, डू यू वांट टू वाइप द बैक साइड ऑफ दिस पर्सन. और मेरे चेहरे के, मेरा मेरे माइंड्स आई में दैट पर्सन's face came and I said, this person, my baby, and cleaning her backside, I'm not going to do that. And I started praying to the teacher. I said, no, I understood one thing very clearly. मुझे neutral playing field पे आना है, ना love ना hatred. Let go, forgive and forgive. How do I get there? उस दिन से मैंने शुरुआत की कि नहीं. And in pranic healing they say, जब भी आप गुस्सा हो आप bless करो उस person को और forgive करो. ये बहुत मुश्किल होता है. When you want to do this to a person, imagine doing this. नहीं होता.
तो मैंने लॉजिकली शुरू किया, भैया मुझे ये नहीं करना है तो मुझे ये करना बंद करना पड़ेगा अभी, you know, you feel like literally strangling the person. I don't want to do this, so I tried to consciously, one step at a time. I did the healing, एक relationship healing का psychotherapy में protocol है. I followed that. I forgave, forget, अपना करती गई. I still remember once I was sitting and doing my Arhatic dhyan. How did I know मेरा forgiveness पूरा हो गया? It's a 45 minutes. It's the same like Zen. And when I'm in stillness, peace, and bliss, and in my mind's eye, I see the face of this person coming up in front of me. और उस समय मेरे दिल से एक ही प्रार्थना निकली, I hope, wish, and pray God that she experiences the same stillness and peace I am experiencing now. And that day I knew it was done. 10 years after the forgiveness, the relative of mine came to me, apologized, and today she helps me spread pranic healing. The only reason she didn't want to come in pranic healing was I was there. And aaj she's come, we are on talking terms, and we are spreading pranic healing together. So if someone says forgiveness doesn't work, healing doesn't work, be there. It is a process. It doesn't happen in one day. हम जितना justify करेंगे उतना time और लगने वाला है. So the smart thing is forgive, forget, and let go. But it is a process. So be easy on yourself. And usually relatives होते हैं. थोड़ी ना कोई राह चलते वाले को अगर मैं बोलूँ I'm not talking to you, it doesn't matter, है ना? वो बोलेगा ठीक है, big deal, don't talk. So जहाँ बर्तन होते हैं, जहाँ friction होता है, वहीं पे मनमुटाव होता है, and it's mostly karmic. The sooner we learn, so instead of saying why me, you have to say try me, but cushion the tests that are coming down. So मैं जब भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन कर दो जो भी टेस्ट आ रहा है. Let it be an open book exam so I can see my answer and answer my question papers. And that means may I become aware of the lessons and may it be an easy paper. Thank you for your question. I hope I answered that. Thank you. I have a question. Yes, yes. So you just said that, you know, the problem could be, let's say, kind of karmic, right? And it may take multiple sessions, obviously, for the person, like you said about yourself. It took a long time before you could forgive, forget, what it is, right? 2 years. Years, yeah, 2 years, right? So I just want to know, in pranic healing, what is their belief in past lives? We all have had past lives. There's a soul class which talks about the 12th chakra, the anatomy of soul, and everything is told over there. And do we believe in past life? Of course, we do believe in past life. हमारा chip same है. हमारा incarnation होता है, and again we go out of incarnation. That is a part of the Arhatic yoga school. Entry level class ही है, या तो basic से शुरू करो या तो soul से. So it will talk about the 12th chakra. And yes, we talk about, in that class, we talk about the rebirth and all those kind of things, why things are happening, how we bring in sanskaras, how we bring in the lessons which we have not learned, what baggage we have carried in, how do you come to know ki bhaiya kya leke aaye hain, how do you have a stronger connection with your higher soul, so you can download your game plan and ask, you know, and go about this life in that. Yes, of course, we do believe in. So do you have some methodology by which during whatever healing y'all are doing, the person can experience a lifetime from where the source of the problem arrives? When we do psychotherapy on a person, जो भी हम लोग healing करते हैं, सबसे पहले हम psychotherapy करते हैं. Psychotherapy talks about wherever the consciousness is blocked. The chakras have a consciousness of their own. So we talk about that in pranic psychotherapy class in detail. Every chakra has a chakral consciousness of its own. So जहाँ पर भी वो अटका है, and we teach a proper technique, and there are certain energies over there and certain beings connected with that. So you know, those are known as thought entities and elementals and all. So we remove all of that and we teach people on that. And in depth we discuss about the different consciousness of each chakra and how do you find out for yourself what is bothering you and how do you get rid of it. And we teach them hands-on technique कि भैया अब इसको time लगने वाला है तो आप खुद करो और कोई भी problem होगा. And we have one-on what do you say, nurturing sessions, practice sessions also. तो वहाँ पे हम इसके बारे में detail में बताते हैं. So you can pinpoint क्या है, because sometimes people say very illogical, मगर मालूम नहीं ये डर कहाँ से आ रहा है. Yeah, so it could be from past life also. So does it use any kind of, let's say, kind of hypnotic technique? No, it's not hypnotic technique. You're in your conscious awareness. You can scan and you can find out.
You can scan and you can find out. It's a you need to know what scanning is. I suggest अगर हम लोग सब मिलके अगर basic advanced psychotherapy करते हैं, I'll be better able to explain, or maybe you can yourself find out. Just say when you go to psychotherapy, you can actually scan anger, irritation, fear, phobia, depression in a chakra. A person may say, I'm not stressed, and you can scan and say, okay, never mind. Just I'll tell you about one person who came to me, and he said he could see things and he could call souls and he could communicate people and all those kind of things. Then he asked me the next question, do you think I'm doing the right thing? I said, I'm not a judge for all of that. आप जो कर रहे हो आपको पता रहना चाहिए. Next day we were talking about hallucinations, verbal and auditory and visual. And he looked at me and he said, do you think I have visual hallucination? I said, I'm not going to tell you anything. I'm going to teach you the technique. You scan your chakra and the internal structure. If there are going to be holes and cracks over there, it's not a siddhi. एक होता है जो clairvoyant होता है. Clairvoyants कौन होते हैं? वो सिद्धि होती है उनकी. अब सिद्धि है या नहीं कैसे पता लगेगा? सिद्धि है या नहीं वो आपके वश में होती है, आपके कंट्रोल में. आप जब चाहो देखो, अब जब चाहो नहीं देखना मत देखो. ये होती है सिद्धि. और एक होता है कि आपका कंट्रोल ही नहीं, बस आप देखते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो. आप that is a problem, that is a बीमारी. और जब आप वो चक्रा में देखोगे ना, वहां पे आपको होल्स मिलेंगे, आपको क्रैक्स मिलेंगे. आई कांट रिवील मोर बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द क्लास. तो जब आप वो स्कैन करके देखोगे, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे. तो फिर उन्होंने मुझे बोला, अगर मैं इस चीजों को हील कर दूं तो मुझे दिखना बंद हो जाएगा. मैंने बोला 2 चीजें होंगी. अगर ये बीमारी है, आपको दिखना बंद हो जाएगा. अगर ये आपकी सिद्धि है, ये बंद नहीं होगा, बिकॉज वो आपके वश में है. आप जब चाहो खोलो, आप जब चाहो बंद करो. सो ये डिफरेंस होता है 2 चीजों में. Yeah. True. Thank you for answering. Thank you. Anybody else? Santosh, I had a question. Somebody had put me sometime back in a twin hearts meditation. Yeah. By Master Choi Sui or some. I'm not Yeah, Chokok Sui. Yeah, that's right. Will it be the same thing? Yes. Twin hearts meditation. We have it 6 a.m. Every day. Morning time. Morning time. Yeah, morning Okay. 6 and रात को 9 बजे. Okay, I was a part of that, so I was just wondering. Yes, it's the same meditation. Rahul, आपने किया प्राणिक healing? नहीं, मैंने ज्यादा किया नहीं है, but वो somebody had put me in the twin hearts meditation, तो वो नाम तो उन्हीं का वही आ रहा था, so I was just wondering whether it is the same one. It's the same one. ये जो session है ना, ये session is going to go on YouTube if I'm not mistaken. That's the only reason we have not done the twin hearts out here, because it's a copyrighted meditation. तो then फिर ये आ जाता कि मेरे को त्रुटि जी को बोलना पड़ता कि यहाँ से edit कर दो, यहाँ से edit कर दो and all that. Maybe we can have a special twin hearts meditation which will not go online, but all of y'all can come together. हाँ, so it was a closed group here. I think it's the Delhi center में they were running it. Yes. So even we have license, we can do it online. But for YouTube and Facebook we have a restriction कि आपको वहाँ पे नहीं करना है. और ये सेशन वहाँ जाने वाला है, उसे ख्याल में रख के ही मैंने यहाँ पे ट्विन हार्ट्स नहीं किया. अदरवाइज इच्छा बहुत थी. आज लव के बारे में बात हो रहा था. सो ब्यूटीफुल, बिकॉज जब तक हम अपने आप को नहीं दे सकते ना, हम बाहर कुछ नहीं दे सकते. व्हाट वी डोंट हैव वी कैन नेवर गिव. And it was so beautiful when I was seeing that magazine come out about love, beautiful articles. It was really, I said, I'm in the right place at the right time. No, we can definitely have another session which cannot be recorded. So Yes. That's okay. That also we do sometimes. Not recorded, not posted. So that can be done also. So awesome. So thank you so much. Any more questions? So Gauri is asking, she wants to be a part of the meditation. Gauri, number अभी we will be sharing everything. Yeah, Trupti ji डालेंगी तो आप you can get in touch and I'll send you the link for the meditation. We'll be sharing everything that Santosh ji has shared with me personally. तो सब कुछ group पे जाएगा. Please go ahead. So Rose iPhone का यहाँ पे आया है. I don't know the name of the person, so I'll just say Rose. Rose saying, it changed my life. Love the example of how we need to do maintenance for soul regularly. Of course, we need to do that. सबसे अच्छा soul का अगर हमको करना है cleansing is charitra nirman. That's known as character building, practicing the yam and niyam. That's a part of Arhatic yoga. That's practiced as a part of Arhatic yoga in our school. और उसके details में maybe in some other sessions. Sure. Okay, so any more questions? Swati Paranda saying, I feel it's how to get rid of depression, how to get rid of depressive memories. Because no matter how much I have,
I invest anything in my body to be healed, but I fail. How does she help the depressive memories, the memories that she has? Yeah. Exactly. So depressive memories are bold. Again, memory is connected with the mind, and that's what we talk about. We talk about creating mindset changes. ये जो memory है जो कैसे तक घूम रहा है अंदर हमारे अंदर, उसी को हमको delete करना है, and that's very very important. एक छोटा सा example देती हूँ संक्षेप में. Everybody close your eyes. ओके नाउ सोचो कि ये ऑनलाइन सेशन नहीं हो रहा है, एक कहीं सेशन हो रहा है. तृप्ति जी ने आपको बोला सबको टाइम पे पहुंचना है, ठीक है. अभी आपके पास गाड़ियां नहीं, आपको रिक्शा लेके आनी है, और आप लोग रिक्शा स्टैंड पे गए हो, आपका लाइन में नंबर आ चुका है, ठीक है. और अभी आप रिक्शा हेल करने वाले हो, मगर उसको एक लंबा भाड़ा मिल गया, तो वो आपको नहीं लेके जा रहा है, वो किसी और को लेके जा रहा है. अब आप जल्दी निकले हो, सब हो गया, मगर आप उस कारण से अभी आप लेट होने वाले हो. नाउ थिंक व्हाट यू आर फीलिंग टुवर्ड्स द रिक्शा वाला. हाउ आर यू फीलिंग? व्हाट इज योर इंटरनल स्टेट? Just for 5 seconds and tell me. ज़्यादा late ये भी नहीं करना वो. Don't ponder on something else. You can put. Get irritated. Okay. Frustration. Okay. Anxious. Yeah. Irritated. Yeah. Definitely not peaceful and Angry. calm. No, definitely. Okay. ठीक है. अब you know अब ये जो आपने अभी who felt this feeling and emotion? Y'all, right? तो ये किसके solar plex में generate हुआ? हालांकि ये सही नहीं है. In the sense, it was just काल्पनिक, मगर ये आपने कुछ feel किया, it was within you, so the energy went to your solar plex. Let's clean it out now. All right? Okay, चलो फिर से आंखें बंद करते हैं, spine straight रखते हैं, हाथों को open रखते हैं अपने lap पे. Inhale slowly. Exhale slowly. 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 Slowly, gently, open your eyes. And I want you to think about the same situation, about that rickshaw wala. What are you feeling now? You're still there on that stand. What are your thoughts and your emotions towards him? How are you feeling? If you're feeling peaceful, calmer, blank, type 1. Indifferent, type 1 in the chat box. Thank you. Trupti, Nidhi, Vaidehi, Vinita, Rahul, typing 1, Rose, Anali. Thank you, Sapna, thank you. So, abhi hua kya hai? Right now, your aura got cleared out, your solar plexus got cleared out, or your thinking, jo aapko irritate ho raha tha, your upper chakras got cleared out. So, most of the chakras are clear, your aura is clear and packed with fresh prana. Now, you are no more reacting, you are responding. ठीक है, अब ये बंदा चला गया, doesn't make a difference. मुझे दूसरा लेना है, वहाँ पहुँचना है. In life, we are reacting. We need to respond. This is creating mindset changes, and this is what I teach. We have a class this weekend on Saturday, Sunday at Powai. If you all are interested, please do contact on the numbers that will be posted, and I'll be more than happy to see you in the class. How are you feeling? Just let me know. Before the starting of the session, what was your mental and emotional states? Intelligent evaluation, what do you feel? I hope I left you with a few things. यही जो healing हमने अभी breathing किया, before lunch, before breakfast, before lunch, before dinner, अगर आप करोगे, you will be in these states all throughout. I think someone's. Thank you. I don't know who is not muted. Done, ma'am. Done. कैसे लग रहा है तृप्ति जी आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे तो. I love
I love doing all kinds of breathing exercise. आ जाओ फिर आपका पूरा ग्रुप आ जाए तो और भी मजा, तो और क्या, all of us I can think learn, we'll have same common we will questions. definitely. Also get in touch with Trupti ji, okay? I think Sapna is from Bombay. Bombay, na Sapna? Sapna's No, only ma'am. I'm from Delhi, New Delhi. Oh, Sapna is from Delhi. But I think our Bombay people, देखते हैं, रत्ना हमारी बॉम्बे से है, और भी बहुत सारे healers बॉम्बे के हैं. I'll put it in the group. And this weekend is not possible. I'm not in Bombay actually. But we will plan and I'll let you know. Yes, और फिर yes. वो weekend हम plan एक करें. ग्रुप बन के करते हैं. Yes, absolutely. You That will be- cannot do this online. You have to be present physically for this. Alright, see, online है एक class है, it's known as self pranic healing class. उसमें you 8 hours का ही class है, तो उसमें कितना कुछ मैं दे पाऊंगी, but you will learn how to heal your respiratory ailments, boost your immunity, how to relieve stress and all those kind of things. ये हम लोग ने lockdown में roll out किया था. So जो बहुत सारे लोग आते हैं, पहले SPH में आते हैं, then they come for the full long class, that way. But when you come for a 2-day in-person class, बहुत सारे questions answer होते हैं, there's no time limit, like 9 to 6 class होगा, and it's like how to heal others, how to heal yourself, and how to heal people at a distance. Right. ये सारी चीजें पहले क्लास में आ जाएंगी. But if you're thinking of doing pranic healing, चाहे कहीं से भी करो, आप basic advanced psychotherapy साथ में सीखना, that completes the package of pranic healing. You understand psychological, physical functions, and there are more spiritual also, but we address the physical and psychological and how to create mindset changes. That's pranic healing. We are definitely going to form Thank a you. group. Definitely. We are going to do it when I come Waiting for back, you. and then, but I'll get in touch with you definitely. ठीक है जी. So thank you Alright. so much, Santosh ji. It was really wonderful. I Atma think namaste. Thank you. explain किया है about the bodies and everything. जो हम भी same concept तो same ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है. But I think it's always good to learn more. मैं हमेशा मानती हूँ कि चीजें सीखनी चाहिए, और you never know how everything combines together, because I believe that everything is the same. हमें सिर्फ integrate करना आना चाहिए हर चीज को. So I think that's the key for us learning. Very well put. Very well. Yeah. So thank you. Thank you everybody for being here today. And I've already shared the newsletter on Thinking Thursday. Shrija has created a form link so that more people can, like, we do it in a proper way. So मेरे Facebook पे मैंने डाला हुआ link. If people want to join the group or they want the newsletter, they can click on the form, fill the details. So अगर आप अपनी Facebook पे share कर रहे हैं, let us try and put the link. So people will fill the form. Nidhi, Shakuntala, Ratna, everybody, just see the link that Shrija has shared. Put that, so we know how many people are actually asking for the newsletter. है ना? थोड़ा अच्छा रहेगा. हम तो वैसे भी देने में मानते हैं, but I think important है कि अच्छा लगे. Let's see क्या होता है ना? So group पे तो डाल दिया है already. ठीक है? Okay then everyone, thank you so much. Thank you, ma'am.